गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एयर इंडिया क्रैश जो हुआ था अहमदाबाद में, उसके बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट रिलीज़ कर दी है। ये रिपोर्ट रिवील कर रही है कि जो इंजन फ्यूल थे, कंट्रोल स्विचेस थे, वो रन से जो है वो कट ऑफ में मूव हो गए थे विद इन सेकेंड्स ऑफ टेक ऑफ। ठीक है। तो ये इंसिडेंट जो है, इससे हमें और ज़्यादा डीपर स्क्रूटनी करनी पड़ेगी एज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। तो अगर हम इन्वेस्टिगेशन देखें तो 1944 का जो शिकागो कन्वेंशन है, वो गाइड करता है एयरक्राफ्ट क्रैश इन्वेस्टिगेशंस को, और जो प्राइमरीली कंडक्ट की जाती हैं स्टेट ऑफ अक्रेंस पर, जो कि इंडिया है। इसके अलावा स्टेट ऑफ रजिस्ट्री, जहाँ पर वो रजिस्टर था एयरक्राफ्ट, स्टेट ऑफ ऑपरेटर, जो उसको वहाँ जहाँ जो जहाँ जो फ्लाइट ऑपरेट करते थे, स्टेट ऑफ डिज़ाइन, मतलब जहाँ पर जो उस एयरक्राफ्ट का जहाँ पर डिज़ाइन किया गया था, और स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चर, जहाँ पर उसको मैन्युफैक्चर किया गया था, उनके पास भी फॉर्मल राइट्स होते हैं कि वो इस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकें। तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है। 2012 में इसे बनाया गया था ताकि ये इंडिपेंडेंटली फ्रॉम रेगुलेटरी बॉडीज़ काम कर सके, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्पावर्ड है कि वो रूल्स बना सके कि कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगा ये डिपार्टमेंट। तो AIIB जो है, इसने क्लासीफाई किया सेफ्टी अक्रेंसेस को एक्सीडेंट, सीरियस इंसिडेंट्स और इंसिडेंट्स में। एम्पावर्ड है ये इमीडिएट और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस लेने का ऑल रेलेवेंट एविडेंस का, बिना किसी अप्रूवल के जुडिशियल या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से। सभी तरह के एक्सीडेंट्स और सीरियस एक्सीडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करता है ये। इन्वेस्टिगेशन फोकस करती है सोनली ऑन प्रिवेंटिंग फ्यूचर एक्सीडेंट्स। ठीक है। तो ये अपने इन्वेस्टिगेटर्स को भेजता है कलेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए पेरिशेबल एविडेंस, ब्लैक बॉक्सेस, रैकेज सैंपल्स को एविडेंस कलेक्शन करता है। फिर डोमेन एक्सपर्ट्स और कोलैबोरेट करता है ये एजेंसीज़ के साथ। एक फाइनल रिपोर्ट पब्लिश करता है और शेयर करता है ICAO और इन्वॉल्व स्टेट्स के साथ। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंडिया टर्न टू रीपे ग्रीन रेवोल्यूशन डेट। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विलियम एस गॉड, जो US एड के थे, उन्होंने टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन 1968 में कॉइन की थी, और उन्होंने दिखाया था इसमें कि क्या एफर्ट्स थे इंडिया के अडॉप्शन करने में हाई यील्ड वीट वराइटीज़ में, तो टू टैकल ग्लोबल फूड चैलेंजेस। US एड ने की रोल प्ले किया सपोर्ट करने में एग्रीकल्चर एडवांसेस, और उसको शट डाउन कर दिया गया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जुलाई 1 को। और उसके क्लोजर से जो है अफेक्टेड इंस्टीट्यूशंस जैसे CIMMYT, जो कि एक मेजर सेंटर फॉर मेज एंड वीट रिसर्च था, वो अफेक्ट हुआ। CIMMYT जो है वो नॉर्मन बोरलॉग से लिंक्ड है। इनिशियली इसको मैक्सिको ने फंड किया था और रॉकफेलर फाउंडेशन ने फंड किया था, लेकिन बाद में वो US एड पर डिपेंडेंट रहा। अब US एड बंद हो चुका है, तो CIMMYT इंडिया की तरफ टर्न कर रहा है अपने फ्यूचर सपोर्ट के लिए। तो ये CIMMYT है क्या? मेजर सेंटर है मेज़ और वीट रिसर्च का। वीट के लिए इसमें रिसर्च की जाती है, और सेमी ड्वार्फ वीट वैराइटीज़ बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है, जो कि इंडिया में शो की गई थी 1964 और 65 में, जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ओरिजिनेट हुआ ये मैक्सिकन गवर्नमेंट के और रॉकफेलर फाउंडेशन के इनिशिएटिव से 1940s और 50s में। तो CIMMYT और जो ये आपका इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, दोनों इंस्टीट्यूशन US फाउंडेशन द्वारा बैक्ड हैं, और ये एक्सपैंड करने में वीट और राइस प्रोडक्शन को ग्लोबली हेल्प करते हैं। US की कोल्ड वॉर स्ट्रेटजी का पार्ट थे। सिग्निफिकेंटली इससे क्रॉप यील्ड्स जो है इंक्रीज़ हुई और रिड्यूस हुए ग्रोइंग टाइम्स। बोरलॉग इसमें इन्वॉल्व थे, तो उनको इसलिए 1970 का नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो इंडिया में वीट और राइस वैराइटीज़ जो CIMMYT और IRRI से मिली थी, उसी से ही हम ड्रिवन जो है ग्रीन रेवोल्यूशन था। इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं अभी भी टॉप सेलिंग बासमती वैराइटीज़ जो हैं ये CIMMYT की रिसर्च से ही आगे एक्सपोर्ट कर पाते हैं। 6.1 मिलियन टन्स ऑफ बासमती इंडिया ने एक्सपोर्ट किया लास्ट ईयर। और नॉर्मन बोरलॉग जो है इंडिया के सक्सेस को क्रेडिट करता है कि IARI की रिसर्च और MS स्वामीनाथन की लीडरशिप की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया है। अभी भी अगर हम देखें तो 2024-25 में 6 आउट ऑफ टॉप 10 वीट वैराइटीज़ जो इंडिया की हैं, वो अभी भी CIMMYT की जर्म प्लाज्म से ही डेवलप की जाती हैं, और मोस्ट न्यू वैराइटीज़ जो है वो अभी भी इनके मटेरियल पर ही रिलाई करती हैं। तो ये CIMMYT और IRRI जो है वो अभी भी इंडिया की फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए क्रूशल है।
इंडिया ने 2024 में सिर्फ $0.8 मिलियन दिए CIMMYT को, $18.3 मिलियन दिए IRRI को। तो इंडिया को अपनी फंडिंग इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के लिए इंक्रीज़ करनी चाहिए, खासकर तब जब हम इनके ऊपर डिपेंडेंट थे, हम मेजर बेनिफिशियरी हैं हम इनके। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी फंडिंग हम इतनी बढ़ा दें कि अपनी खुद की एग्रीकल्चर रिसर्च जो है सिस्टम है उसको वो सफ़र करने लगे, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स फॉर एंटिटीज़ जो 8 ऑफ द 9 हैवी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में इन्वॉल्व है, और वो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के कंप्लायंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है। तो CCTS क्या एक मार्केट बेस्ड फ्रेमवर्क है रेगुलेट और ट्रेड करने के लिए कार्बन क्रेडिट्स। इसका एम है कि एक्सेलरेट करे इंडिया की ट्रांजिशन टू अ लो कार्बन इकोनॉमी। प्राइमरी एम है इसका कि डीकार्बनाइज करे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को बाय शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम एनर्जी एफिशिएंसी टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इंटेंसिटी। इसको ओवरसी करता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और NSCICM, ओके। तो इंडिया का पहले पैट स्कीम थी जो एम्फोसाइज करती थी एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स पर और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स के थ्रू। लेकिन अब ये CCTS जो है सुपर सीड कर रही है पैट को। अब ये डायरेक्टली GHG एमिशंस को इंटेंसिटी को ही टारगेट कर रही है ताकि कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स जो है वो इशू हो सके। टारगेट सेक्टर्स इसमें 8 है आउट ऑफ 9। पावर सेक्टर इसमें भी एक्सक्लूड है, लेकिन आने वाले टाइम में इसको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो एंटिटीज़ जो इसमें ऑब्लिगेटेड होती हैं वो सेक्टर स्पेसिफिक एमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स उन्हें मीट करने होते हैं। एंटिटीज़ जो इससे आउटसाइड हैं वो वॉलंटरीली इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है बिहार में, इसकी वजह से इलेक्टोरल इंक्लूजन के ऊपर डिस्कशंस आ गई हैं। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होते हैं? सेक्शन 19 जो है RPA का वो कहता है एक पर्सन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में और वो एनरोल हो सकता है इलेक्टोरल रोल में। तो सिर्फ ओनिंग या पोजेसिंग ऑफ अ हाउस इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बनाता है। एक पर्सन अगर टेम्पररी एब्सेंट है फ्रॉम रेगुलर रेजिडेंस, वो फिर भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है अपनी लोकेशन में, जैसे कि अगर वो आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल का है, स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का जो आउटसाइड द स्टेट सर्व कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो अब्रॉड पोस्टेड हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्ड करने वाला पर्सन है या उनके स्पाउस हैं। सेक्शन 21 कहता है कि NRIs भी जो है वो रजिस्टर और वोट कर सकते हैं अपने पासपोर्ट मैंशनड एड्रेस पर। ECI जो है रिस्पॉन्सिबल है इलेक्टोरल रूल्स प्रिपेयर करने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम करती है इन कंसल्टेशन विद ECI, और वो ही इलेक्टोरल रूल्स प्रिपेयर करते हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन देखते हैं, प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन देखते हैं। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो इसलिए है क्योंकि वोटर जो है उसका कोई जेन्युइन और हैबिचुअल कनेक्शन है उस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, तभी वो वहाँ से वोट कर सकता है। इससे इलेक्टोरल इंटेग्रिटी भी बनी रहती है, फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रेशन भी नहीं होती और अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहती है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जरावा ट्राइब। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कंसर्न्स रिगार्डिंग एन्यूमरेशन ऑफ आइसोलेटेड इंडिजिनस ट्राइब्स आ रहे हैं, जरावा ट्राइब खासकर से रिलेटेड, क्योंकि जो सेंसस शुरू होने वाला है, ठीक है। तो जरावा ट्राइब क्या है? ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं। PVTG का इनको स्टेटस मिला हुआ है। 250 से 400 इंडिविजुअल्स हैं, मिडल और साउथ अंडमान आइलैंड्स में रहते हैं। डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स और कोस्टल जोन्स में हैबिटेट है इनका। ये एक्सटिंक्ट जो जंगली ट्राइब है उनके डिसेंडेंट्स हैं। ये अफ्रीका से माइग्रेशन हुई थी तब आए थे यहाँ पर, और ये ब्रिटिश कोलोनाइजेशन को भी इन्होंने सर्वाइव किया है इंक्लूडिंग World War II। हंटर गैदरर फिशरमैन है ये, अपनी रॉबस्ट फिजिकल हेल्थ के लिए जाने जाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 16 सेंसस कर रही है, इसमें इस बार कास्ट एन्यूमरेशन भी होने वाला है 1931 के बाद पहली बार। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अदिति स्कीम। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक सिग्निफिकेंट पुश दे रही है इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए गवर्नमेंट, और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है इसलिए एक अदिति स्कीम लेकर आई है जो कि कैटलाइज करेगी अडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज अमंग MSMEs। ऑफर किया जाएगा इसमें फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट उद्यम रजिस्टर्ड MSMEs को, ताकि वो एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज जो है वो अपने कम से कम 10% एनर्जी बचाने के लिए वो इंक्लूड कर सके अपनी बिजनेस में। तो इसमें इंटरेस्ट सब्वेंशन लोन्स दिए जाएंगे, ठीक है, 5% MSMEs को और 3% जो है वो मीडियम एंटरप्राइजेस को। तो इसमें प्रोविजंस है कैपेसिटी बिल्डिंग के भी।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बराक वैली। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने अर्ज किया है प्राइम मिनिस्टर को कि वो कनेक्टिविटी क्राइसिस जो है बराक वैली का उसको एड्रेस करें। तो बराक वैली सदर्न मोस्ट रीजन है असम का। बराक रिवर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। 3 सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम इसमें आते हैं, काचर, हैलाकांडी और करीमगंज। बॉर्डर शेयर करता है ये मेघालय के साथ, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और सिलहट डिवीजन ऑफ बांग्लादेश के साथ। बहुत फर्टाइल लैंड्स हैं यहाँ पर। सिलचर इसकी वन ऑफ द मेन सिटीज़ है। अब बराक रिवर क्या है? सेकंड लार्जेस्ट रिवर है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आफ्टर ब्रह्मपुत्र रिवर। ये मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम और बांग्लादेश के थ्रू रन होती है। राइज होती है ये मणिपुर हिल्स से और स्पिल होती है ये बे ऑफ बंगाल में जाकर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज तालिस्मान साबर 2025। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया अलॉन्ग विद 18 अदर नेशंस जो है वो तालिस्मान साबर 2025 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है ऑस्ट्रेलिया द्वारा लेड। लार्जेस्ट बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। हर 2 साल में एक बार की जाती है 2005 से, और एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक के लिए ये डिज़ाइन की गई है। मोर देन 35,000 मिलिट्री पर्सनल इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यूएस और ऑस्ट्रेलिया के अलावा इस बार कनाडा, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया और ये सारी कंट्रीज भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Aircraft Accident Investigation Bureau. This topic is important for your governance section. So a month after Air India crash in Ahmedabad, Aircraft Accident Investigation Bureau has released its preliminary report. This report has revealed both engine fuel control switches moved from run to cut off within seconds of takeoff. And this incident has prompted deeper scrutiny as part of AIIB's ongoing investigation process. So as per the 1944 Chicago Convention, the ICAO uh, is overseeing this process, and aircraft crash investigations are primarily conducted by the state of occurrence. So apart from that, state of registry, state of operator, state of design, state of manufacturer also have formal rights to participate in the investigation process. So AIIB is under Ministry of Civil Aviation of India, and it was established in 2012 to ensure investigation is independent from regulatory bodies. Government of India is empowered to make rules for investigating aircraft accidents in India, and also which involves Indian registered aircraft. AIIB is now designated as an attached office of the Ministry of Civil Aviation. So it classifies safety occurrences as accidents, serious incidents, and incidents. It is empowered with immediate and unrestricted access to all relevant evidence without requiring any prior approval from the judicial or government authorities. It investigates all accidents and serious incidents, and investigations focus solely on preventing future accidents. Okay. So AIIB sends investigators to collect and preserve perishable evidence, black boxes, wreckage samples, and it also includes data from, it also collects evidence from operators, regulators, involved personnel, unrestricted access to all relevant material. It may engage domain experts and collaborate with agencies like HAL and DGCA laboratories. After internal review, a final report is published and shared with the ICO and involved states. Okay. So the next topic is India's turn to repay Green Revolution debt. This topic is important for your economy section. So William S. Gord of USAID coined the term Green Revolution in 1968, highlighting efforts like India's adoption of high-yield wheat varieties to tackle global food challenges. USAID played a key role in supporting such agricultural advances, and it was recently shut down by the Trump administration. And its closure has affected institutions like CIMMYT, which is a major center for maize and wheat research. So this CIMMYT, linked to Norman Borlaug, was initially funded by Mexico and Rockefeller Foundation. Later, it relied heavily on US aid, and now with US aid shut down, it is relying or it is turning to India, which is one of its biggest beneficiaries for future support. So this is a major center for maize and wheat research. It is to wheat what the Philippines-based International Rice Research Institute is to other big cereal grain crops. So it has developed semi-dwarf wheat varieties, which were first sown in India and sparked the Green Revolution. It originated from a Mexican government and Rockefeller Foundation initiative of 1940s and 50s. So CIMMYT and IRRI,
are the key institutions backed by the US foundations, and they helped expand wheat and rice production globally. This was part of US Cold War strategy to prevent food-related political instability and communist influence. So Borlaug's wheat varieties and IRRI's semi-dwarf rice strains significantly increased crop yields and reduced growing times. Borlaug received the 1970 Nobel Peace Prize also for his contributions to global food security. Green Revolution in India was driven by wheat and rice varieties from CIMMYT and IRRI. Okay, so IARI scientists developed the top-selling basmati varieties based upon the germplasm supplied by CIMMYT, and India has therefore been able to export 6.1 million tons of basmati in the last year. 6 out of top 10 varieties of India of wheat varieties in India were developed using their CIMMYT's germplasm. And CIMMYT and IRRI remain crucial for India's food security and agricultural growth. So India has contributed just $0.8 million to CIMMYT and $18.3 million to IRRI, despite being a major beneficiary. So, therefore, India should increase its funding for these global institutions, but this support must complement, not replace, the investment in India's own agricultural research system. So the next topic is carbon credit trading scheme. This topic is important for your environment section. So recently, Indian government has announced greenhouse gas emission intensity targets for entities in 8 of the 9 heavy industrial sectors participating in the carbon credit trading scheme's compliance mechanism. So what is CCTS? It's a market-based framework to regulate and trade carbon credits. And the aim is to accelerate India's transition to a low carbon economy by assigning a monetary value to greenhouse gas emissions. The primary aim is to decarbonize industrial sectors by shifting focus from energy efficiency to greenhouse gas emissions intensity. It is overseen by Bureau of Energy Efficiency and NSCISM. So India has made transition from PAT to CCTS. So the Perform, Achieve and Trade scheme, which emphasized on energy efficiency improvements, has now been superseded by CCTS, which is now focusing on greenhouse gas emissions intensity. The target sectors include 8 high emission sectors, but the power sector is currently excluded from the compliance mechanism. But of course, it is being said that it will be included later in later phases. Entities who are obligated must meet their sector specific emission intensity targets. Entities which are outside the compliance mandate can voluntarily participate in reducing emissions and earning carbon credits. Okay. So the next topic is ordinarily resident. This topic is important for your governance section. Election Commission's special intensive revision in Bihar has sparked discussions on electoral inclusion. So who is an ordinary resident? So according to section 19 of RPA, only a person who is an ordinarily resident in a constituency can be enrolled in electoral rolls. So it states that merely owning or possessing a house in a constituency does not qualify a person as an ordinary resident. A person temporarily absent from the regular residence will still be considered ordinarily resident in that location. Specific categories of people like armed forces, people, state armed police forces who are serving outside the state, central government employees, persons holding constitutional office, and their spouses will still be ordinarily resident in their original constituency. So Section 20A allows NRIs to register and vote from the address mentioned in their passport. ECI is responsible for preparing the electoral rolls under the RPA Act. So the requirement of ordinarily resident ensures that voter has a genuine and habitual connection with the constituency, and it maintains electoral integrity, reduces fraudulent registrations, and ensures accountability in representation. The next topic is Jarava tribe. This topic is important for your social issues. So concerns regarding enumeration of isolated indigenous tribes, especially the Jarava tribe of Andaman Islands, were addressed by experts who said reaching the Jaravas will not be tough due to existing contact and welfare initiatives. Jaravas are among the world's oldest surviving indigenous communities. They are recognized as PBTGs. They are about 250 to 400 individuals. They inhabit the Middle and South Andaman Islands. Their habitat includes dense tropical forests, mangroves, and coastal zones. Jaravas are believed to be descendants of the extinct Jangil tribe. Their ancestry can be linked to the first wave of human migration out of Africa. They survived the British colonialism and even World War II. They are hunter-gatherer fishermen. They are known for their robust physical health. The government of India has announced that 16th census of India will be conducted in 2 phases, and this time there will also be a caste enumeration, the first since 1931.
The next topic is Aditi scheme. This topic is important for your economy section. So, in a significant push towards industrial competitiveness, job creation, and climate goals, Union Ministry of Power, through the Bureau of Energy Efficiency, is launching first of its kind scheme called Aditi. The aim of the scheme is to catalyze and adopt the energy efficient technologies among MSMEs. The scheme offers comprehensive financial and technical support to Udyam registered MSMEs, enabling them to implement energy efficient technologies with a proven potential to save at least 10% of energy. They will be provided interest subvention on loans, 5% for micro and small enterprises, and 3% for medium enterprises. The scheme also includes provisions for capacity building. Okay. So the next topic is Barak Valley. This topic is important for your environment section. So Assam Pradesh Congress Committee President has urged Prime Minister to urgently intervene in worsening connectivity crisis of the Barak Valley, which is the southernmost region of Assam, named after Barak River. The three southernmost districts of Assam, Kachar, Hailakandi and Karimganj constitute this valley, and this valley shares borders with Meghalaya, Mizoram, Manipur, Tripura, and Sylhet division of Bangladesh. This area is known to have fertile lands, and Silchar is one of the main cities of this region. What is Barak River? It is the second largest river in northeast India after Brahmaputra. This river runs through Manipur, Nagaland, Mizoram, Assam, and Bangladesh. It rises from the Manipur hills and spills into Bay of Bengal. So the next topic is exercise Talisman Sabare 2025. This topic is important for your security section. India, along with 18 other nations, is participating in Talisman Sabare 2025, which is a major bilateral military drill led by Australia. This is the largest bilateral military exercise between US and Australia, conducted between both sides biannually since 2005. It is designed to advance a free and open Indo-Pacific. More than 35,000 military personnel are going to participate in this exercise. In addition to US, forces from Canada, Fiji, France, Germany, India, Indonesia, Japan, and other countries are participating in it, and even Malaysia and Vietnam are attending as observers. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.